यूआरएल नहीं मिल रहा है उसको। मैम लॉगिन करना पड़ेगा। फिर से क्यों डिस्प्ले बाकी है? हाँ ठीक है, देन अपडेट एंड डिलीट डिस्प्ले के बाद। आप शेयर कर रहे हो सर? अपडेट के लिए मुझे नहीं लगता इनको जरूरत है। ओके अंकित, आपको अपडेट मतलब डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्योंकि आपको जरूरत है क्या? प्रतीक हर्षवर्धन भी सेम ही चीज पे अपडेट बाकी है, बाकी उन्होंने डिलीट आर्काइव कर लिया, पर अपडेट सबका बाकी है। उनका डिस्प्ले तो कब परसों ही हुआ था शायद। हाँ, बट उन्होंने पहले वो डिलीट आर्काइव एंड वो सब कर लिया, गेट आर्काइव फिल्टर वगैरह। ओके, अपडेट बचे। अपडेट बाकी है। ठीक है, तो जरूरत है क्या शो की? उनको पूछो एक बार। प्रतीक, हाँ उन्हें मतलब आज ही बताने वाली थी मैं तो। सबका ही बाकी है सर, सब अपडेट। हाँ मैम। ठीक है फिर एक मिनट में शेयर करता स्क्रीन। हेलो सर। यस। हाँ, यूआई देखा मेरा? हाँ देखा है देखा है। ओके सर, ओके। प्रतीकन वो एक वीक लैग कर रहे हैं क्या? कब ज्वाइन किया था उन्होंने, मतलब कब फंडू स्टार्ट किया था उन्होंने, वो डेट? मुझे भी ये सेकेंड वीक में, पता नहीं, याद नहीं होगा ये उनका। बट सैटरडे तक हो जाएगा उनका भी शायद। नहीं, उनका कोलैबोरेटर्स भी है ना। ठीक है, okay, so all of you are done up to the here, right? Display note, have any issue with display notes 163 batch? आप डिस्प्ले कर सकते हो ये नोट्स? हाँ सर, कर लेंगे। ओके, तो कोई इशू नहीं आएगा तब तक, राइट? ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अपडेट द नोट. So when we click on this title or description as well, okay, both places when we click on title or description, okay, so we have to open this dialog box. This is called dialog box, okay. So sorry, in the material there will be dialog is here. Okay, you can use your material and use the first one dialog. Okay, which one is pick one? So सर एक बार डिस्प्ले नोट का भी बता दो इन सब, मतलब
ये लोग ओके, डिस्प्ले नोट का कुछ नहीं, अभी तक आपने यहाँ पे गेटा नोट्स कॉल किया है ऑलरेडी, राइट? यहाँ पे नोट्स प्रिंट हो रहे हैं आपके, हाँ इसकी जगह पे, राइट? ये नोट लिस्ट को अटैच करो, मतलब इसे असाइन करो, एंड असाइन करने के बाद ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग करो यहाँ पे, चाइल्ड टू पैरेंट रिलेशन, पैरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप, वी हैव टू शेयर द डेटा बिटवीन पैरेंट टू चाइल्ड। यहाँ पे हाँ हाँ ये शेयर करने के बाद आपको डिस्प्ले के अंदर @input करके डेकोरेटर यूज करके यहाँ पे वो जो एरे है ना, ये वाला, ये नोट्स एरे, मतलब ये प्रॉपर्टी बाइंड वाला जो वेरिएबल है, वो आपको यहाँ पे इनपुट करके यहाँ पे ले लो, ठीक है? देन ये नोट्स एरे जो है वो डायरेक्टली डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ng4 लगा दो उसे, नोट द टाइटल इन डॉट डिस्प्ले मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, नो इशू। ओके 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 ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें न्यू कॉम्पोनेंट क्रिएट करना है। ओके, तो वो होगा अपडेट, नाम उसका अपडेट। ओके, GGC अपडेट। तो okay, just copy this. We require this only pick one. Okay, it is showing here. See, when we click on this pick one, it is opening, right? So just we require this click and open dialog function on the description and title. We will add here. Okay, and next the TS file. This is the open dialog function. Copy tab. Put it in display. Okay. Now just import this. Okay, and constructor as well. It's a dialog constructor made one object. So ये मैट डायलॉग का एक कंस्ट्रक्टर बनाओ यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो ये नाम है ना, ये हाँ, तो ये जो कंपोनेंट का नाम होता है ये, ठीक है? डायलॉग व्यू, डायलॉग ओवरव्यू एग्जांपल डायलॉग जो है, ये क्या है? कंपोनेंट का नाम, कौन सा जो आपको ओपन करना है वो। ओके Sir, can you say that in English? yes, this is the component name which is we have to open in a dialog box. Okay, means which component we created, update. Okay, so we have to give Yes. the name of that update component, update component. Okay, got it? Yes, sir. Okay, next. This is not required, and this is also not required currently. We will remove this data from notes. Now we can check in the browser in our home. /notes. Okay. So it is showing
Null injector. Okay, so mat dialog module is not imported yet. We'll import it first. Mat dialog module. Okay, so when I click on this first title or description, it will open dialog. Okay, now see, it is opening here. Okay, so in your case, it will not. It is not required. Okay, just here. It is required here only. And component. That component. Components. Okay. 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 So this it is not required in modular TS file in your version. Okay. This entry component is not required. From Angular 10 and above, this is not required because I'm working on Angular 8. So that's why it is required here. Okay. Just import this mat dialog module and you can check on the browser directly. Okay, it will work. So I will click on this first, then it is opening. Okay, now it is showing update works. So this update works is in the HTML of this update node component here. Okay, so now second part. Now I need some data. Okay, in the update. Okay, when I click on somewhere, okay, and this data is opening. So but that previous data is there. This title and description means previous title and description, and their nodes id is required for calling the update node. Id is required there, right? So how to share data from display to this dialog box component? So that functionality is provided by this dialog data. Okay, in the dialog box, see there is a one variable. Okay, one property is there, data property. So whatever we are sharing here, it will be here on the, this is the another component. Okay, this is the update component, our update component. Okay, this one, this component up to the here. Okay, it is from our component, and this is the display component. Okay, so in the update component we have to import this all things. Okay, I will copy this constructor in the update component. Okay, so here the name of update component will be update component. Okay, again import these things. Okay, instead dialog data we will any. Okay, we will making here any. Now in the display I'm sharing what I'm sharing here, name. Instead of that name I will
message. Okay, I'm giving the message name there. Okay, data from display notes. This data is coming in this data here. Okay, and I can print here on the data. Okay, instead of data, we this data. Okay, means this data. It is coming from dialog data. Mat dialog data means it is from display notes. Whatever we shared here in the display, this data. Okay. So now we will print here this and giving the message as well from display notes. Single node. Okay. Now see here when I click on this one node, okay. See whatever I written there, that is coming here. Data from display notes. This is the message I have written there, right, in the dialog box, and it is printing here at the line number 17 in update component.ts file. Means line number 17 means here. Okay, you got it? Yes, sir. Okay, so now how to get that particular one node? Okay, so where you are now, see here in the display, you are getting here. Okay, using ng4 you are printing that all nodes, right? So particular in the array, there are multiple nodes and there are objects. We need their title, description plus particular that nodes ID there, right? So we will pass this totally one node here. So in this, there is a title, description plus ID. All information is there, right? In this particular one node. Okay. So we will just pass that notepad. Okay, as it is to the this node instead of that. Okay, got it? How we are passing? We are just pass that in the parameter that particular one node, and whatever is the parameter, it is as it is passed to the this data. Now this data will print on this line number 17 here. Okay, at line number. Let's see. See that title and description. Got it? Yes, sir. Okay. Yes. Then now what we have to do here in the dialog box, we can assign that data to the particular one variable here. Okay. Make a title variable here and description variable. Sure. Title equal to data. Okay. Data dot title. Okay. Which data? This data. Okay. Up to the in the constructor we not require this. Okay, if we are using in ng on it, then it is required this okay, this keyword for this data. Okay, so this dot description equal to data dot description. Okay, and this data and title, this title and description we will print on console here using view in that input. Okay, and here ng model
equal to title. And here description. This spelling mistake should not be there. Okay, whatever is the spelling here, okay, this should be same here. There is a spelling mistake, it will not be printed. Okay, so you have to design properly. Okay, and see now how it is working. Now here can update it, and there is a one close button. On that close button, we have to call the API. UpdateNote API. Got it? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Anyone have doubt here? For sharing data, anything, how to share this data? You understood? Particular OneNote, how to open in this dialog box. Okay. There is no doubt. Anyone? So we have to add that close button also, like that. Yeah. You have to do it. Yeah. Here you have to design should be look like this. Okay. These icons are there also. So you can use their icons component there. You have to use that icons component here. Okay, Here sir. use share icons component and close button as well. Okay. UI should be looks like this same. Okay. Nothing is changed here. Same to same. You have to do it same to same. Okay. This Yes. one. Yes. Just only ये do, undo and redo ये बटन नहीं होंगे तो चलेंगे. ठीक है? Okay. और कुछ? Anyone have any doubt? Ashwin, you understood what we have to do? Yes, sir. Okay. Pratik, Ashwardhan. Yes, sir. सर Yes. वो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वो जो डैशबोर्ड ओपन होता है डायरेक्ट, तो उसका कैसे करना है सर? आप क्या कर रहे हो? आपने क्या किया दिखाओ मुझे. मैंने किया नहीं है अभी. Okay. मतलब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर वो यूआरएल डालना पड़ता है ना डैशबोर्ड का, तो ऐसा नहीं जब आप करना है, लॉगिन मतलब करते हो यहाँ पे राइट, यहाँ पे डॉट हाँ। सब्सक्राइब है. सब्सक्राइब के अंदर आपको पहले क्या करना है? यहाँ पे इंपोर्ट करना है एंगुलर राउटर. ओके. राउटर है. ओके. फ्रॉम एंगुलर राउटर किधर दिख रहा है यहाँ पे? इसमें वो एंगुलर राउटर मॉड्यूल है. हाँ, एंगुलर स्लैश राउटर. इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे. राउटर. ओके. राउटर हो गया. अभी जब भी मैं क्लिक करूंगा ऑन सबमिट पे तो हम रीडायरेक्ट करेंगे कहीं और पे. ठीक है. तो यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट राउट. यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स है. एक देखो ये नेविगेट है, नेविगेट बाय यूआरएल है, नेविगेटेड है. तो हम क्या करते हैं अभी के लिए भाई नेविगेट बाय यूआरएल करता. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सा यूआरएल देना पड़ेगा आपको? डैशबोर्ड नोट स्लैश होम. मेरा होम है. होम स्लैश नोट्स. ठीक है. ऐसे ही है ना मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ.
यहाँ पे लॉगिन com/notes ही है मेरा तो कितने होता है क्या ओके हाँ सर। ऑटोमेटिकली हो गया वो हाँ हाँ और नेक्स्ट क्लिक पे जा रहा है इतना ही कुछ अलग से नहीं जब आप लेकिन इतना यहाँ पे याद रखो कि ये कब लिखना है ये वाली लाइन जब आपका रिस्पॉन्स सक्सेसिव मिले एंड आपका जो लोकल स्टोरेज है ना लोकल स्टोरेज का लाइन जो आपने टोकन स्टोर करके रखा है उसके हाँ, हाँ। बाद होना चाहिए ठीक है अगर पहले करोगे तो लोकल स्टोरेज में आपका डेटा सेव नहीं होगा उससे पहले ही वो कंपोनेंट अनमाउंट करेगा यहाँ से ओके ओके सबसे हाँ एट द लास्ट मतलब सब्सक्राइब के अंदर ही होना चाहिए लेकिन सब लाइन के बाद मतलब आपका वहाँ पे लोकल स्टोरेज में डेटा सेट होना चाहिए अगर आपका स्नैक बार है तो स्नैक बार भी चलना चाहिए देन ये रिडायरेक्ट करना है आपको ओके ओके सर। क्योंकि आप स्नैक बार यूज कर रहे हो ना ऑल ऑफ यू नहीं सर। ओके हाँ बिल्कुल यूज करो फिर यूज करो जब लॉगिन होता है तो आपको यूजर को समझ में आना चाहिए यूजर ऐसे इंस्पेक्ट करके तो नहीं देख सकता ऐसे हाँ नेटवर्क कि यार वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ राइट हाँ सर। स्नैक बार करके जो है यहाँ पे यू कैन यूज दैट देखो यहाँ पे स्नैक बार होगा वो देखो, ऊपर में पॉपअप देता है ना वो। हाँ पॉपअप देता है राइट ये देखो ऐसे ऐसे ये वाला हाँ हाँ आ जा रहा मल्टीपल टाइम्स यू कैन यूज एनीवन यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे ठीक है ये हाँ वाला सर। यूज कर सकते हो इसका कोड छोटा एक लाइन का कोड होता है वो ज्यादा कुछ नहीं होता ओके ओके सर। ठीक है हाँ टीएस में होगा यहाँ पे किधर गया वो स्नैक बार हाँ देखो ये ओपन स्नैक बार जो है ना ये फंक्शन इसके अंदर वाला पार्ट ये इतना ओके ठीक है ट्राई करो ये हर जगह पे जब भी आपका सक्सेसफुल होगा एंड फेल भी होगा तो भी वो मैसेज आना चाहिए फेल करके एंड जो फेल वाला मैसेज होगा जो भी वो भी दिखना चाहिए वहां पे स्नैक बार में उसका कलर चेंज होना चाहिए स्नैक बार का अगर ग्रीन मतलब ऐसे लिखो कि थोड़ा जब सक्सेसफुल होगा तो थोड़ा अलग दिखना चाहिए एंड फेल होगा तो रेड कलर में दिखना चाहिए वो स्नैक बार ऐसे कलर में चेंज करके करो ठीक है हाँ सर। ओके एनीवन हैव एनी इशू देन एंड सर वो ऑथगार्ड का लिंक भेज दो क्या हाँ राइट राइट ऑथगार्ड भी करना है राइट हाँ भेज दो सुबह यही है भेजा ना? तो वही है ना मैम। हाँ यही है क्या अंकित सुबह आपने वो भेजा था उनको वही था ना। हाँ, प्रतीक और उनको जो भेजा था हाँ ये कुछ नहीं है स्टेप्स फॉलो करो ठीक है ये हो जाएगा इतना कुछ मतलब डिफिकल्ट काम नहीं है देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टेप तो ऑलरेडी हो चुका है आपका ठीक है ये सेकंड वाला सेकंड से आगे करना है क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है तो सेकंड एनजीजी गार्ड जैसे अभी सर्विस कॉल सर्विस क्रिएट किया आपने कंपोनेंट्स क्रिएट किए वगैरह वगैरह तो इसी तरह से एक गार्ड भी क्रिएट करते हैं ये होगा आपका प्रोजेक्ट लेवल पे ठीक है यहाँ पे ये सेलेक्ट भी करना पड़ता है शायद कैन एक्टिवेट करके तो ये कैन एक्टिवेट ही करो यहाँ पे ठीक है एंड देन ये सर्विस जो है ये सर्विस कहाँ पे क्रिएट करनी है आपको सर्विसेज फोल्डर के अंदर गार्ड सर्विस करके ओके हाथ गार्ड सर्विस तो सर्विस नाम मत दे दो जिस अथगार्ड लिखो अथगार्ड NGGS अथगार्ड ऐसे प्रॉपरली क्रिएट करो एक फोल्डर बना के उसको सर्विसेज फोल्डर में बनाओ उसे ठीक है बाकी वाली स्टेप वन बाय वन फॉलो करते जाओ मतलब Yes. इसमें कुछ सिखाने वाला कुछ है नहीं जिस स्टेप फॉलो किया तो भी हो जाएगा वो ओके हेलो हाँ सर। ठीक है और किसी को इश्यू है कुछ डाउट है अपडेट नोट में डिस्प्ले में हो जाएगा अभी आज सब
ट्राई करते हैं सर। ट्राई करते सर। देखो डिस्प्ले के लिए तो आपने सब यूआई बना दिया है आपने, राइट? आपका डिस्प्ले करने के लिए जस्ट 5 मिनट का टाइम चाहिए आपको। 5 मिनट का हाँ, मतलब आपको शुड डेटा शेयर करना है, राइट? एंड Yes, sir. बाकी तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ऑलरेडी आपने डिजाइन करके रखा है आपने सब। ओके, हेलो सर। तो अपडेट वाला ट्राई कर सकते हो आज, ठीक है? यस Yes, sir. ओके ठीक है। हेलो सर। हाँ मुझे प्रतीक हर्षवर्धन के लिए बता दो ना क्या क्या करवाना है, तो मैं एक्स्ट्रा सेशन लेके करवा दूंगी। उनके लिए वो कौन से बैच में है वो? 157। 157 सर मैं 3 मैम। फोन से कनेक्ट करती हूँ, 2 मिनट बस। 153 153। हाँ हाँ सर 153। हर्षवर्धन, अरे यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। इंटेलेक्ट डिजाइन है ना, हर्षवर्धन एंड प्रतीक। ओके ओके ओके। हाँ सर।